Because your habits are not the only action that influence your identity, but the virtue of their frequency, they are usually the most important ones. Each experience in life modifies your self image, but it's unlikely you would consider yourself a soccer player because you kicked a ball once on an artist because you scrambled a picture. As you repeat these actions, however, the evidence accumulates and your self image begin to change. The effect of one of experience tends to fade away while the effect of habits gets reinforced with time, which means your habit contributes most of the evidence that shape your identity. In this way, the process of building habit is actually the process of becoming yourself. Lots of things friends. First, not only और but या not only but also का पेयर होता है जिसे कंजंक्शन बोलते हैं. सेकंड, ईच एक्सपीरियंस. ईच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है. मॉडिफाइज लिखा है, मॉडिफाई नहीं लिखा है. हाउएवर, हालांकि. हाउएवर का मीनिंग क्या होता है? हालांकि. टेंस टू मीन्स जैसे प्रवृत्ति होना, जैसे हम हैं मीन्स हमारी आदत होना कि हम कुछ बुरा फील करते हैं तो हमारी आदत है कि वो चला जाता है या हमारे अंदर रहता है. टेंस टू प्रवृत्ति होना हमारी जैसी भी हम सोचते हैं. रेनफोर्स्ड. रेनफोर्स्ड क्या होता है? सुदृढ़ करना मीन्स बढ़ाना, मजबूत करना. थैंक यू सो मच फ्रेंड. लेट्स सी इन दी